गोंयकाराच्या हातात गोंयचो फुडार नव्या वर्सात काँग्रेस सरकार। आम्ही सगळ्या गोंयच्या प्रजेक आव्हान केल्लें की एक बरें सरकार, स्टेबल सरकार 5 वर्सां खातीर तुम्ही डिसिसिव्ह मॅन्डेट दिया, मिक्स्ड मॅन्डेट दिनाका। आणि आतापर्यंत ज्या वोटिंगाचो पॅटर्न आमच्या लक्षात येता तो पळयले जाल्यार अशें दिसता की गोवन्स आर वोटिंग फॉर ए डिसिसिव्ह मॅन्डेट अँड आय एम कॉन्फिडंट that Congress will form the next government for the next 5 years with people's mandate. Goa has been asking for a change and positive change. Do you think really the change is going to happen? It is happening everywhere. I am in constant touch with some of our leaders in other constituencies. The response is very good and response is decisively for Congress. This is the speciality. I have told that if there is a wave in favor of Congress, you will find many surprises. ते सरप्रायझीस कितें आसतले ते तुमकां 10 मार्चाक कळटले। आनी हे जो कोण बारक्यो पार्टी आयल्या पळय मतां फोडपाक तांकांय 10 तारखेक लोक गोंयकार म्हणजे कितें जशें पंडित जवाहरलाल नेहरून म्हणिल्लें अजीब है गोवा के लोग, तशें हांकां म्हणचें पडटलें की अजीब है गोवा के लोग म्हणून। नहीं, दिगंबर साहब सवाल ये है कि सीएम साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है। उनका कहना है कि वैलेंटाइन डे का गिफ्ट गोवा की जनता उनको ही देगी। वो 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। जिसको सत्ता जिसके सर में जाती है, जिसको पावर का एरोगेंस होता है, उसको सब इनकम्बेंसी दिखती है।